Hello, my dear student. Welcome to the subject name is business environment. Today we are going to discuss new topic that is a corporate governance. Let's begin with the meaning part. Corporate governance is basically a system which is used to control and direct the company. एक system है which is of made up of rules, procedure, practices by which the company are governed. So we can say that it's a basically application of the best management practice, fulfillment of all laws and ethical standard for effective management. एक ऐसा application best management practices है जिसमें कि laws and ethical standard होते हैं for effective management. तो कंपनी को मैनेज करने के लिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए बेस्ट मैनेजमेंट, इफेक्टिव एप्लीकेशन, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिससे कि आप कंपनी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं विद इथिकल लॉ एंड एथिकल स्टैंडर्ड आर देयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है एंड द डिस्चार्ज ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द स्टेक होल्डर. तो यहाँ साथ ही साथ ऑल द जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द स्टेक होल्डर वो परफॉर्म की जाती है. दैट इज बेसिकली नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो हम कह सकते हैं जितने भी रूल्स, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस होते हैं जो किसी कंपनी को गवर्न करने के लिए चाहिए होते हैं वो बेसिकली क्रिएट करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस. यहाँ पर मेंशन किया है स्टेक होल्डर. बेसिकली स्टेक होल्डर बेसिकली आर द पर्सन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी में इंटरेस्ट होता है जिनका, लाइक शेयर होल्डर, मैनेजर, एम्प्लॉइज, सप्लायर एंड कस्टमर आर द एग्जांपल ऑफ द स्टेक होल्डर. फादर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बॉब ड्रेकर एंड हिज कॉर्पोरेट गवर्नेंस बुक्स 1984 में जो पब्लिश हुई, दैट्स व्हाई ही called as father of corporate governance. Here I've mentioned some definition of corporate governance which is given by the Cadbury Committee. A Cadbury Committee is basically made for the corporate governance, and this committee has defined the corporate governance as a system by which the companies are directed and controlled. ये वो system है जिसमें companies को direct and control किया जाता है corporate governance में. इसमें क्या होता है, एंटायर मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन ऑफ द कंपनी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंपनी की पूरी फंक्शनिंग को, मैकेनिज्म को कंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है और यहाँ अटेम्प्ट किया जाता है कि बैलेंस मेंटेन रहे शेयर होल्डर, डायरेक्टर, एम्प्लॉइज एंड ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के बीच में एक बैलेंस रिलेशनशिप मेंटेन रहे. तो corporate governance में, so that in order to achieve the corporate or company goal. Another definition which is given by the OECD 2004, the corporate governance also provide the structure by which the objective of the company are set. Corporate governance एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें कि कंपनी की गोल को सेट किया जाता है एंड एज वेल एज मीन्स ऑफ अटेंडिंग उस गोल को अचीव करने के लिए जितने भी आपके मीन्स होते हैं, तरीके होते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो डिटरमाइन किए जाते हैं एंड एज वेल एज मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस आर डिटरमाइन. और साथ ही साथ जितनी भी मॉनिटरिंग उस गोल को अचीव करने के लिए जितनी भी मॉनिटरिंग प्रोसीजर होते हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो वी कैन से ओवर एंड ऑल दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली सिस्टम है रूल्स, प्रोसीजर एंड रेगुलेशन का जिसमें कि कंपनी की गवर्नेंस, कंपनी को गवर्न करने से रिलेटेड स्टेप लिए जाते हैं, कंपनी को मैनेजमेंट करने से, कंपनी को कंट्रोल करने से रिलेटेड गवर्नेंस की जाती है. दैट्स व्हाई दिस प्रोसीजर इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Need and objective of corporate governance to safeguard the money of the investor or shareholder, to ensure the success of the corporate sector of the company, or you can say to give ease of the access in the chief fund in order to get the chief fund from the investor or from the bank and from the financial institution. The main objective of the corporate governance to access the chief fund from the bank or the financial institution. Corporate governance is basically basically a foundation for the good corporate citizenship because it help the shareholder as well as their stakeholder and they fulfill their social responsibility towards the stakeholder. That's why it's a foundation for the good corporate citizenship. Attach ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अटैच करता है ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव को, मीन्स ग्लोबली लोगों को प्रोस्पेक्टिव दिखाता है, एज अट्रैक्ट करता है ग्लोबली एज अ फ्यूचर foreign people or foreign company invest in that particular corporate sector. There are a number of theories of the corporate governance. The first theory is agency shareholder theory. This theory says that, as you know,
एजेंसी क्या होता है? एजेंसी में एक दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है एंड एजेंट होता है, एंड वन मोर एंड पर्सन एंगेज, द वन पर्सन इज प्रिंसिपल एंड अदर पर्सन इज एजेंट. एजेंट प्रिंसिपल की बिहाफ पे काम करता है, एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the decision making is basically given to the agent. तो agent on the behalf on the behalf of the principal work for the agency. In a same manner, जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो शेयर होल्डर जो ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं वो वर्क एज अ प्रिंसिपल, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द मैनेजर वर्क एज अ एजेंट. हियर यू कैन सी अ डायग्राम. प्रिंसिपल इज बेसिकली अ शेयर होल्डर इन अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड एजेंट बेसिकली डायरेक्टर. प्रिंसिपल शेयर होल्डर जो होते हैं वो एजेंट मीन्स डायरेक्टर को एम्प्लाई करते हैं. डायरेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली मैनेज करते हैं कंपनी को, एंड और इस तरह से वर्क परफॉर्मेंस होती है, किसी कंपनी में मैनेजमेंट किया जाता है. प्रिंसिपल जो होता है बेसिकली जो डायरेक्टर होते हैं अकाउंटेबल होते हैं टूवर्ड्स द शेयर होल्डर, और यहाँ पर इस तरीके से इस वे में काम होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल द एजेंट वर्क. तो दिस इज ऑल अबाउट द एजेंसी थ्योरी. नाउ स्टीवर्ड थ्योरी. दैट जो मैनेजर होते हैं वो वर्क एज अ स्टीवर्ड. स्टीवर्ड मीन्स दे लीड द कंपनी इन अ राइट डायरेक्शन. तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ ये कहा गया जो शेयर होल्डर और स्टीवर्ड होते हैं. स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होता है, जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं. स्टीवर्ड वो होते हैं जो मैनेजर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑलवेज टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस और द कंपनी और द कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड दे ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ. तो शेयर होल्डर की वेल्थ और मैक्सिमाइज पे फोकस करते हैं. शेयर ऑलवेज एम्पावर द ट्रस्ट टूवर्ड्स द स्टीवर्ड. तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है इट्स बेसिकली देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द स्टीवर्ड. बोथ पार्टी आर कंसर्न टूवर्ड्स देयर इंटरेस्ट. तो दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए कंसर्न रहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीवर्ड थ्योरी. स्टीवर्ड थ्योरी यही कहती है कि जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं बेसिकली वर्क एज स्टीवर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड द शेयर होल्डर इज कंसर्न टूवर्ड्स द steward and empower the trust. And steward means manager and board of director to concern towards the shareholder for the maximize the shareholder wealth. So both party are favorable for each other. Now moving toward the next, that is a stakeholder. This theory says that कि जो मैक्सिमम जो मैनेजर होते हैं दे कंसर्न टूवर्ड्स नॉट ओनली द शेयर होल्डर बट दे हैव अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप टू सर्व. एंड नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप उनका रहता है मैनेजर का मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का. दे आर कंसिडर, दे ऑलवेज टेक इनटू take into account the interest of the stakeholder party. Stakeholder means consumer, customer, manager, employees के बारे में भी कंसर्न रहती है, नॉट ओनली द शेयर होल्डर. तो यहाँ स्टेक होल्डर थ्योरी यही कहती है कि जो मैनेजर होते हैं वो हमेशा कंपनी को मैनेजमेंट करते वक्त दे ऑलवेज कंसिडर द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट. Now moving towards the principles of the corporate governance, they are the principles. कुछ principles और सिद्धांत है जो corporate governance में. फर्स्ट principle is right of the shareholder. पहला प्रिंसिपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यही कहता है कि जो शेयर होल्डर है जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था उनकी राइट्स उन्हें मिलने चाहिए. राइट्स मीन्स द शेयर होल्डर गेट द मैक्सिमम रिटर्न from the risk capital they have invested in the company. And the second is equitable treatment of the shareholder. Shareholder should be treated in an equal manner. Okay, their problems can be resolved, or they have to be redressed, and their rights should be protected, their interests should be protected. The next principle, that is a stakeholder. The corporate governance framework should recognize the legal rights of the stakeholder. Stakeholder को legal rights provide करना is a principle of the corporate governance. Now another is disclosure and transparency. Disclosure होना चाहिए as well as the transparency होनी चाहिए whenever the financial performance, management and ownership of the business is concerned. Now moving toward the board of director. Next principle of the corporate governance is that the board of directors should set the direction of the company and monitor the management in order that company will achieve its objective. तो board of director ही company की direction और management को monitor करेंगे ताकि company अपने goal and objective को achieve कर सके. Now moving toward the fourth pillar of the corporate governance. फोर प्रिंसिपल है जिसकी बेस पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जिस्ट करती है. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स जो मैनेजमेंट होता है वो अकाउंटेबल रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकाउंटेबल टूवर्ड्स अ शेयर होल्डर. दैट इज अकाउंटेबिलिटी.
pillar. And second is a fairness. In corporate governance, the second base of the corporate governance is the fairness. Corporate governance में fairness होनी बहुत जरूरी है. It means the protect the shareholder rights, treat all shareholder इंक्लूडिंग माइनॉरिटी इक्विलिटीवली प्रोवाइड इफेक्टिव रिड्रेस. इनकी इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनको रिड्रेस करना और शेयर होल्डर को राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दैट इज शुड प्रोवाइड अ फेयरनेस टू द शेयर होल्डर. Now the third pillar, that is transparency. It ensures that timely, accurately disclose all the material information, including the financial situation, performance, ownership, and corporate governance related information should be revealed to the shareholder as well as the stakeholder party. Now the third pillar, that is independency. It means that board of director जो भी decision लेंगे, it should be free from any kind of influence. So their decision should be free from any kind of influences, and there should not be any kind of conflict between the interest of the इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द एडवाइजर. और यहाँ पर बेसिकली मिनिमाइज करना है तो ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो. तो वी कैन से दैट देयर इज 4 प्रिंसिपल: अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी. नाउ मूविंग टुवर्ड द व्हाट इज अ गुड कॉर्पोरेट सिस्टम क्वालिटी. तो क्या गुड कॉर्पोरेट सिस्टम की जब हम बात करते क्या है? एक गुड कॉर्पोरेट सिस्टम वो हुआ, गवर्नेंस सिस्टम वो हुआ जहां पर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंसिडर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एवरीवन, जिसमें हर एक की इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाए, उसको गुड कॉर्पोरेट सिस्टम बोलते हैं. ऐसा गुड कॉर्पोरेट सिस्टम होता है जिसमें कि कंपनी डिलीवर करती है लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पर लॉन्ग टर्म सक्सेस और इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करते हैं. दैट comes under the category of good corporate governance system. Maintain confidence of the investor. Investor की confidence को maintain करना and increase their confidence level, that also part of a good corporate system. Has impact on the price of the share and improve the trust in the market. तो प्राइस ऑफ द शेयर्स को इंक्रीज करना, पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी मार्केट में क्रिएट करना, दैट ऑल्सो फीचर ऑफ द गुड corporate governance system. Another is improve control over the management, improve करना मैनेजमेंट के कंट्रोल को एंड इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन सिस्टम. गुड गवर्नेंस सिस्टम में मैनेजमेंट पे अच्छा कंट्रोल होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे वेल में मेंटेन होता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम में. तो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम एक अच्छा तब हुआ जहाँ पर गिव गाइडेंस टू द ओनर एंड मैनेजमेंट अबाउट व्हाट आर द गोल स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी. तो जहाँ पर ओनर मीन्स शेयर होल्डर और मैनेजर को ये गाइड किया जाता है कि कंपनी की गोल स्ट्रेटेजी क्या है. तो यहाँ पर प्रॉपर मैनर में हर चीज स्पेसिफिकली मेंशन होती है एक गुड कॉर्पोरेट सिस्टम में. नाउ मिनिमाइज वेस्टेज, करप्शन, मिनिमम रिस्क एंड द मिसमैनेजमेंट मिनिमम होना चाहिए. दैट ऑल्सो अ फीचर ऑफ द गुड कॉर्पोरेट governance system, and it helped to create a reputation, strong brand reputation होनी चाहिए. Moving towards the why corporate governance is so important. Corporate governance की importance क्यों है? क्योंकि corporate governance अगर अच्छा हुआ तो कंपनी को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी वो फॉलो कर रही है. इट मीन्स द कंपनी इज नॉट फेस एनी काइंड ऑफ रिस्क एंड एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन भी अगर होता है तो इजीली रिस्क को मिटिगेट कर सकती है. मिटिगेशन मीन्स रिस्क को रिड्यूस कर सकती है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसलिए जरूरी है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिस्क मिटिगेशन हो जाता है और कितने भी पॉलिटिकल एंड टेक्निकल इकोनॉमिकल इवेंट आते हैं उनका डिसरप्शन जो भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो इसी इजीली कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर अच्छा हुआ तो इजीली आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं. एंड एनहांस शेयर होल्डर corporate governance in India play an important role in protecting valuation of the company, because the ultimate goal of governance is maximize the interest of the all shareholder and the better image during the economic downturn. So corporate governance is maintaining the better image during the economic downturn and improve organization efficiency. Corporate governance basically maintain or enhance the corporate performance and better economic result. So the corporate governance lay down the foundation for the behavior of the company and utilize the resources, product and innovated overall. So we can say that corporate governance पूरे रिसोर्सेज को अच्छे से बेस्ट मैनर में यूटिलाइज करता है. नाउ क्रूशियल ड्यूरिंग द merger and acquisition. Merger and acquisition में corporate governance play an important role. It basically received
it maintain improve the quality of governance. वी कैन से दैट कि जब भी कोई रिस्ट्रक्चरिंग होता है या किसी कंपनी में चेंजेस आते हैं तो गुड गवर्नेंस से इजीली मर्जर एंड एक्विजिशन काइंड ऑफ कंडीशन को इजीली डील कर सकते हैं. So this is for the about the importance of corporate governance. Now moving toward the last slide, that is a corporate governance example. Infosys, Tata, Wipro, TCS are the one of the best example of one of the best company who is flag of success flying high in the sky due to the good coverage, good corporate governance. So this is all up for today now. Thank you, my dear student.